Have you ever opened your old Python code and thought ये मैंने क्या लिखा था? और इससे भी worse, when someone else sees your code and says explain this. So don't worry, we resolve this problem today. In this example, we have a different types of data. So without any documentation, we didn't understand what is P here, what is R here, and what is T here. So hello everyone, welcome to the Codecraft. In today's video, we are going to learn about the comments in Python. What are the importance of comment and how they are used. So in this example, this is the example of the simple interest. But we didn't understand what is the SI here and what is the P here, what is the R here and what is the T here. So for the human being assistance, we use the comments. The coding is for the computer, but the comments is for the human being. So in our first question is, what are the comments? So basically comments are the lines in your code that Python completely ignore. This code is not executable by the Python, and these are the only for the human being, not for the computer system. They are written for the human, not for the computers. They help us and understand what your code is going on. So in the previous example, here we see when we want to know about what is our program is happen. So suppose that कि हमने यहाँ पे कोई फैक्टोरियल का कोड लिखा है, तो हमें नहीं पता कि हमने फैक्टोरियल में क्या पैरामीटर्स लिए हैं, क्या इनपुट पैरामीटर्स हैं और कौन से हमारे आउटपुट पैरामीटर्स हैं. अगर हम इनका सही से डॉक्यूमेंटेशन कर दें तो वो हमें फर्दर प्रोग्राम में असिस्ट कर सकता है. सो comments are the optional part in any programming language, and they are for the assisting the developer and the programmer. So in the comment section we can write the name of the program, कि हमारा प्रोग्राम का नेम क्या है. We can also write the date of the program and what are the logic they are used and which type of methods they are used and which type of functions and libraries our program is used. So comments are the a complete documentation for the developer or programmer. When they in the future, when they open your computer, they understand about all things about their programs. So in this example, here we see A, B, C, but we didn't understand what is A here, what is B here, what is C here, and finally we print the output. In the suppose that at the last we have the output like 0.100.18 like that. So what is the this value? This is the C, but what is the C here? What our program actually doing here? हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने किस पर्पस के लिए यहाँ प्रोग्राम बनाया है, हमें ये फाइंड आउट नहीं हो रहा. अब इसी पॉइंट को हम किसी और फॉर्म में अगर हम राइट कर दें, सपोज दैट in this example, here we see, like in this example, first line represent A equals to 100. 100 is the product price,
and B here represent the GST rate, and C is here calculating GST about our particular amount. So here the program is calculating the GST. So here C is our amount which have the GST. So in this example we have a comments, but in the previous example we didn't use the comments. So right now हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम जब कमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो प्रोग्राम बहुत क्लियर और रीडेबल हो जा रहा है। रीडेबल होने की वजह से हम हर वेरिएबल और हर पैरामीटर की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ 100 एक्चुअल में क्या है, बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, these lines which is written by using hash symbol, these lines are ignored by the programmer, these lines are not executed. ये lines यहाँ पे execute नहीं होगी because at the previously I told you कि जो हमारे comments होते हैं वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए हैं और हमारे कंप्यूटर के लिए सिर्फ क्या होता है, हमारा कोड होता है। तो जो कोड है वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए है और जो कमेंट्स है वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए हैं, जो उसे असिस्ट कर रहे हैं, उसे ये बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम किस टाइप का। तो अगर हमें प्रोग्राम की या कोई हम बड़ा कोड बना रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो पूरे कोड का अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है तो हम वहाँ पे कमेंट्स का यूज़ करते हैं जो हमारे फ्यूचर पर्पस के लिए हमें यूज़ आता है। तो whenever we open our program we easily understand what is going on in our program. So we have two types of comments in Python, single line comment and the multi-line comment, and this is also known as a doc string. In the single line comment, which is represented by the head symbol. So in this example, hello here is print by using the print function, and with the print method here we use the comment. So the comment is always written by using the hash symbol. यहाँ हमने हैश सिंबल के साथ अगर जो भी लाइन हमने लिखा है, दिस here become here comment. ये हमारे पास यहाँ क्या बन गया है, comment, which means this code is ignored by the Python and this is not executed by Python. So this is not a executable स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं रहेगा, ये सिर्फ हमारे पास एक हेल्प फॉर्म में रहेगा जो हमें असिस्ट करेगा, प्रोग्राम के बारे में हमें बताएगा। तो व्हेन वी यूज द सिंगल लाइन कमेंट देन वी यूज द हेड सिंबल. So next is when we use the multi-line comment, we use the different hash symbol. So in this example we use the 3 lines. So in the 3 lines we use the hash symbol. The second method we use the 3 triple quotes or the single 3 triple quotes. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस लाइन में हमने यहाँ पे 3 ट्रिपल कोट्स को यूज़ किया है। तो यह फर्स्टली हमें अगर मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना है तो हमने ओपन 3 ट्रिपल कोट्स एंड क्लोजिंग 3 ट्रिपल क्लो, और इसके बीच में हमने हमारा क्या लिखा है, कमेंट्स को हमने यहाँ पे राइट किया है, राइट। तो हमें यहाँ पे हमारे कमेंट्स को अगर मल्टीपल लाइंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कोड के सेक्शन को हमें कमेंट्स बनाना है जिसे हम नहीं चाहते कि वो फर्दर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बने, इन दैट केस हम इसे क्या बना सकते हैं, कमेंट्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिपल कोट्स. If we want the inline comment, then we use the x equals to 10 and then use the comment section.
तो इन दिस एग्जांपल दिस इज नोन एज अ इनलाइन कमेंट्स। इसमें हमने क्या किया, पहले हम कमेंट लिख रहे थे, उसके बाद स्टेटमेंट लिख रहे थे, बट किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ हमें ये बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस स्टेटमेंट के साथ हम इसे कैसा बना सकते हैं, इनलाइन कमेंट्स बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इनलाइन कमेंट्स के साथ हैश सिंबल यूज़ किया और हैश सिंबल के साथ हमने कोड को यूज़ किया है। बट बी केयरफुल, डोंट ओवर यूज़ इनलाइन कमेंट्स एंड कीप देम शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। सो अगर बहुत बड़ी लाइन का हमें इनलाइन कमेंट नहीं बनाना और हर जगह हमें इसे यूज़ नहीं करना है। सो डोंट ओवर यूज़ द इनलाइन कमेंट। For more updates and if you find this video helpful, so then don't forget to like the video and comment your favorite Python topics and subscribe to Dr. Code Crafts for more coding in simple language.